Yeah, good morning, friends, and welcome to the session. I'll wait for at least 30 seconds. सब traders join कर रहे हैं. And कल का market जो था हमने देखा कि straddle price के आसपास ही रहा है. There was no big surprise. How many of you are starting to observe the straddle price? Expiry था, इतना कम straddle price में बहुत बड़ी movement आती नहीं है. और expiry day के दिन yeah, 150 odd points move is a decent enough a move. How many of you noticed that? So I'll just wait. Traders are joining. Today we are having a very low attendance. Yeah, Kaustum, good morning. I think now everybody is joining. Be punctual, friends. Let's not lose valuable time in the morning because see, this session मैं 9 बजे ख़त्म करता हूँ. इसलिए 9 बजे ख़त्म करता हूँ कि फिर आपके पास जो 9 से सवा 9 बजे का टाइम मिलता 15 मिनट, you can plan and prepare your trades. Fine. Whatever we discuss here is for educational and informational purpose. So I will read out the disclaimer. This is for educational and informational and does not constitute financial advice. So let's see what market looks like on 19th 19 तारीख के दिन. आज थर्सडे है और no, today is Wednesday. So one day left for Sensex expiry. Yeah, I'll wait for traders to join. They are joining. Please be very punctual, friends. सेंटिमेंट्स की बात करते हैं तो कल जो एफआईज और डीआईज के फिगर्स है उस पर एक नजर डाल लेते. So yesterday, both the numbers for FIs and DIs positive है. FIs ने 1650 करोड़ की बाइंग की है और DIs ने 2000 करीब करीब 2580 करोड़ की बाइंग की है. So yesterday we did had some good amount of buying as far as the cash market is concerned. बट फिर भी आप बोलोगे मार्केट नीचे गया तो आई थिंक इट वाज एक्सपायरी प्रेशर. Call writers had a big hand, heavy hand yesterday, and somewhere down the line इस तरह का जब प्रेशर आता है कॉल राइटर्स का तो मार्केट एक एक्सपायरी डे में एक पुश नीचे दे देता है. नथिंग टू बिग और नो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज आउट देयर. एंड वी वर वाचिंग द ओपन इंटरेस्ट इन द ऑप्शन साइड और कॉल में भर भर के कॉल किस राइट किए हुए थे ट्रेडर्स में. सो दे वर जस्ट सिटिंग कंफर्टेबल. एंड कल का कोई भी ऐसा सेंटिमेंट्स भी नहीं था, ट्रिगर्स भी नहीं था कि एक सरप्राइज मूव अपसाइड आ सकता है. तो देखिए जब भी कॉल राइटर्स को कॉन्फिडेंस आ जाता है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ देयर क्रेडिट स्प्रेड्स और रेशियोज or anything on the credit side working in their favor, it becomes tough for the market to rally on a expiry day or even spike up. अगले दिन का हाई के ऊपर टफ होता जाना because that's where the strikes are, the writer strikes. So let's start as usual. Before I start, let me make an announcement. देखिए अभी का जो मार्केट है ना वो रेंज बाउंड है. तो एवरी थर्सडे को जो हम टॉपिक करते हैं, द टॉपिक विच वी डू एवरी थर्सडे, टुमारो इज रेस्पेक्टेड टू हाउ टू फाइंड द रेंज फॉर द एक्सपायरी विच इज वीकली एक्सपायरी एज वेल एज मंथली एक्सपायरी. तो इसका जो वॉलेटिलिटी मेजर रहता है दो तरीके से रहता है. विक्स के बेस पे रहता है, एटीआर के बेस पे रहता है और स्ट्रैडल प्राइस के बेस पे रहता है. तो कहीं ना कहीं यू नीड टू हैव अ मास्टरी ओवर वॉलेटिलिटी मेजर्स गिवन द काइंड ऑफ मार्केट कंडीशंस राइट नाउ आप जिसमें ट्रेड कर रहे हो. So anybody who have not registered, I have given the link in the chat. Do register for this sessions. Volatility measure से आप रेंज डिफाइन कर सकते हो, ट्रेड जोन डिफाइन कर सकते हो, स्ट्रेटजीज पिक कर सकते हो ओनली ऑन द क्रेडिट साइड. So don't miss this session. We'll be doing in great details about it. So let's now go back to, if you have not registered, please do go and register right now. So headlines अगर देखते हैं तो US stock futures steady after Wall Street hits by higher yields and oil. So more or less flattish to sideways market है. सब यहाँ पे तो red दिख रहा है including Dow Jones. एक झलक मार लेते हैं what the global indices are doing. Anybody who have not registered, all the participants do registered. I have given you the link out there on about the session. So अगर हम ग्लोबल फ्यूचर्स देख लेते हैं अभी तो यूएस फ्यूचर्स 50 पॉइंट डाउन है. सारा यूरोप भी अभी नेगेटिव में चल रहा. ब्राजील बोवेस्पा इज डाउन, निका इज 0.30 माइनस, चाइना इज ऑल्सो माइनस. तो कहीं ना कहीं एक प्रेशर जैसा है आज.
वेडनेसडे के दिन मार्केट पे. बट yesterday we did had a dip. I think more or less gift nifty should be flattish because minute here मेरा कंप्यूटर हैंग कर गया because I have opened so many windows. तो थोड़े बंद कर देता हूँ, इसका पर्पस हो गया. So all the traders who have not registered, be quick. So अगर गिफ्ट निफ्टी हम देखते हैं, गुड मॉर्निंग कमलेश. सो गिफ्ट निफ्टी अभी एक दो इनसाइड डे चल रहा और करीब करीब 16 पॉइंट प्लस है. तो देखिए मार्केट का प्रेशर तो है, नो डाउट अबाउट इट. इसके बाद एक बार हम क्रूड देख लेते हैं. लेट्स गो एंड हैव अ लुक एट द क्रूड फ्यूचर्स. सो क्रूड देखिए अभी भी ये हाई नहीं क्रॉस कर रहा. मेरे हिसाब से ये हाई क्रॉस करना टफ है क्रूड को. कहीं ना कहीं आई एम एक्सपेक्टिंग क्रूड टू टेस्ट द सपोर्ट्स रेजिस्टेंस गैप का. जैसे आप सबको अभी मास्टरी हो गई होगी गैप पे. गैप रेजिस्टेंस आर टफ टू क्रॉस. It needs some very very positive triggers or some big breakouts on technical or geopolitical concerns to again flare up for it to cross the gap. And after this, let's go to India VIX. अगर इंडिया विक्स देखते तो रेंज छोड़ नहीं रहा है. देख रहे हो आप. देखिए जब तक ये रेंज है आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहो, मार्केट इसी तरह का रहने वाला है. We are not going to see any big moves out there as far as the markets are concerned because देखिए यहाँ पे भी कहीं ना कहीं वॉलिटिलिटी इंट्राडे वाली है. आप टेल भी देख रहे हो, विक भी देख रहे हो, विच मीन इंट्राडे थोड़ा स्पाइक्स ऊपर भी आ रहा है और इंट्राडे डिप भी आ रहा है. विक्स इज क्लियरली डिनोटिंग इन अ रेंज वी हैव बीन स्टक इन अ इंट्राडे वॉलेटाइल रेंज, नॉट अ स्विंग वॉलेटाइल रेंज. सो विक्स भी ये दर्शा रहा है कि मोर और लेस मार्केट का जो अभी का जो आप माहौल देख रहे हो, डायरेक्शन देख रहे हो, प्राइस एक्शन देख रहे हो, वो इंटैक्ट रहने वाला है. इट्स नॉट शोइंग एनीथिंग विल गो अवे रिसेंटली कि कोई बहुत बड़ा ट्रेंड इमर्ज होके आ जाए. एटलीस्ट ऑन दिस विक्स चार्ट आई एम नॉट एबल टू सी दिस. डू यू ऑल अग्री फ्रेंड्स? Only 7 likes out of 28. So yeah, sometimes you don't like this session, is absolutely fine. सो विक्स हमें दिखा रहा है कि रेंज अभी इंटैक्ट है. बहुत बड़ा मत सोचो, रोज का रोज काम करके निकल जाओ. देयर आर डेज विच मार्केट्स आर restrictive to day trading. Currently we are having such stage or credit spread traders on the option side. ये दो traders का market है right now. So देखिए this tail says intraday spike ऊपर भी आती है, VIX says that dip भी आता है and this range is too strong काफी दिन से. और मुझे नहीं लग रहा immediate there might be break of this range. इतना देखने के बाद अभी हम निफ्टी पे जाते हैं. देखिए दो चीज निफ्टी में आपको ध्यान रखना है. यहाँ पे अभी कहीं ना कहीं निफ्टी ये गैप पे आ गया. इट विल कीप पुशिंग इनसाइड दिस गैप नाउ, फाइन, विच इज 24,000 के आसपास तक का एक स्तर दिख रहा है निफ्टी में. क्या उसके में नीचे जा सकता एज द डे प्रोग्रेसेस? कीप अ वॉच ऑन इट. और एक चीज तो आप यहाँ पे मार्क करके रख दो विच इज द 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज. देखिए एक ही चीज जिसने हमें एक राइट डायरेक्शन पे रखा है निफ्टी पे. हाउ मेनी ऑफ यू अग्री और नॉट दैट फॉर द लास्ट 10 to 15 days वी आर फॉलोइंग द 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज. इसने हमें सही ट्रैक पर रखा मार्केट का. यहाँ पे भी एक बार भाव ने छोड़ दिया ना एवरेज, फिर क्लियर था इट बिलोंग्स टू द सेलर्स का पलड़ा भारी हो गया. तो 200 डे अब आज तो मुझे नहीं लगता प्ले में आएगा, बट बी अवेयर ऑफ इट. So I'm not expecting all the way up there till here, but it's not, I'm not expecting that's the resistance now. So I'll remove this. क्या मार्केट ओवरसोल्ड हो रखा है? देखिए मार्केट ओवरसोल्ड भी नहीं हो रखा, काफी जगह यहाँ पे 23,700 की. सो और ये जो फ्लैग में मार्केट, अभी फ्लैग तो नहीं बोलूंगा, काफी दिन हो गया, ये चैनल में मार्केट इंटैक्ट है. सो देखिए विक्स की चैनल इस तरह की है. दिस इज द चैनल ऑफ विक्स. दोनों को ही चैनल मानते हैं. दिस इज द चैनल ऑफ निफ्टी. जब तक ये ऊपर नहीं तोड़ेगा निफ्टी इसमें ही रहने वाला है. दैट्स द लाइफ ऑफ योर trader right now. So now let's be specific to today's thing.
तो सबसे पहले आपको एक काम करना है, ये जो गैप वाली कैंडल है ना, इसको आप पूरी ले लो, फुल रेंज ले लो आज के लिए। तो दिस इज वेर योर सपोर्ट इज, जो कि यहाँ से 100 पॉइंट नीचे है। ओके, सो इससे पहले ये सब लेवल्स जो है इसको मैं पिवट पॉइंट्स बोलूंगा। चलो थोड़ा होल्ड किया, 20-25 पॉइंट मिल गया, दैट्स फाइन। और कल जो मार्केट गिरा था कहीं ना कहीं ये कंजेशन जोन से गिरा था। तो अभी मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाके आई वांट टू फिगर आउट फर्दर दिस थिंग। सो देखिए एक्सट्रीम तो यहाँ पे है, बट आई हैव माई डाउट्स वेदर मार्केट विल कम टिल हियर, वो आपको इंट्राडे पे देखना पड़ेगा। और एल्स कैन यू सी देयर वाज अ डिक्लाइन, एक बेस आया यहाँ पे एंड देन यहाँ तक आया मार्केट एंड देन इट डिप। देखिए प्रीवियस डे जहाँ पे मार्केट रुकता है ना, वहाँ पे सेलर्स रहते, रिमेंबर दैट। सो आई थिंक फेयरली डिसेंट मार्केट टू चार्ट टुडे। ओके, और हाउ मेनी आर यू यूजिंग वीवैप? और फिर यहाँ पे भी अगर मैं चैनल मार्क करता हूँ तो आई कैन क्लियरली मार्क द चैनल। So the channel will run like this. I think today market may break the channel on the downside. देखते हैं, we don't conclude anything because whatever we are doing is for educational and informational purposes only, and we are studying the price action or the chart patterns. Kaustam, yeah. So what you should be aware of it right now is VWAP. Right? कल भी वीवैप तोड़ने के बाद सर उठा के देखा नहीं है निफ्टी ने वीवैप के ऊपर। सो मोर और लेस मार्केट्स आर फिक्स्ड टुडे। जस्ट कीप अ वॉच ऑन दिस चैनल लो। अगर चैनल लो निकल जा रहा है ना, विच इज अराउंड 24,120 लग रहा है निकल जाएगा, तो एक प्रेशर जैसा रहेगा मार्केट पे आज। सो नथिंग इज चेंजिंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रीवियस ट्रेंड। जो पहले का माहौल बना हुआ है विच इज अ ड्रिफ्टिंग डाउन मार्केट्स इज लाइकली टू स्टे इंटैक्ट, एंड इंट्राडे स्पाइक्स वही 20-25-50 पॉइंट की आती रहेगी, एंड दैट्स हाउ द मार्केट लुक्स लाइक टुडे। एनी ब्रेक ऑफ दिस हाई विल बी अ बिग सरप्राइज टू मी, बट उससे भी अगर निकला तो भी 24,280 का जो गैप है उसके ऊपर तो नहीं लग रहा है। So this is how Nifty is, and your VWAP is going to be a very crucial indicator today. After this, let's go to Bank Nifty. So how many of you are still not registered for this session? It's volatility measures rule, because this session is specifically मैंने जो given the market condition है उसके बेस पे 3 measures रहते हैं volatility के, ATR based, straddle price based from the option price, and the rule of VIX which is a square root of 252 and 52. ये तीनों रूल्स क्या है हम डिटेल में कल वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस, सो मेक श्योर यू आर देयर। आई विल गिव यू ऑल द स्टडी नोट्स आल्सो. So if you have not registered, I have given you the link in the chat. Do register. देखिए ऑप्शन ट्रेडर के लिए अगर रेंज डिफाइन नहीं है तो आपके लिए ट्रेड करना बहुत टफ है. सो नाउ लेट मी गो टू बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी इफ आई गो टू डेली चार्ट्स, मैंने 200 डीएमए का लाइन डाला था. दिस इज व्हाट वी प्लान फ्रॉम यस्टरडे. हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर? वीवैप थोड़ा 200 डीएमए 2 बार आया बट नहीं क्रॉस कर सका. Do you all remember this? So let the 200 DMA on Bank Nifty be running across the price charts. देखिए बहुत बार एक कोई स्टडी की रेलेवेंस आ जाती है तो हमें उसे प्लॉट करके रखना पड़ता है. So how many of you observed that yesterday के 200 दिन का एवरेज पे बैंक निफ्टी में इंट्राडे दम तोड़ दिया था. So now from here on friends, I'm again dropping the 200 DMA. मैं क्या लाइन ड्रॉप कर देता हूँ. That's it. अभी 60 मिनट्स पे जाते. देखिए इंट्राडे का जो रेफरेंस पॉइंट है वो आपको डेली से आएगा. So this is the 200 DMA. Let this line be there in front of your price charts. कल पूरा दिन बैंक निफ्टी एक रेंज में रहा. अगर बैंक निफ्टी रेंज में रहता, प्रेशर डाउन रहता, तो लास्ट लो को मैं सपोर्ट नहीं मानूंगा, पिवट पॉइंट्स मानूंगा. देखिए क्या डिफरेंस रहता पिवट पॉइंट्स और सपोर्ट में. ये पिवट पॉइंट आपको जो फॉर्मूला वाला पिवट पॉइंट है वो नहीं है. Any low in context of the downswing is considered pivot, which means अगर ये जो high है, if this high is lower high, that means this is likely to be tested and broken based on market condition, whether by a big margin or by a small margin. So now let's me go to hourly charts पे अगर आप देखने जाओ तो इसको मैं सपोर्ट नहीं मानूंगा. आई जस्ट यहाँ पे एक स्टैक सपोर्ट है. स्टैक सपोर्ट का मतलब है दो लेवल्स साथ मिल रहे हैं.
सो सच लेवल्स आर गुड सपोर्ट इंट्राडे और मार्केट कहीं ना कहीं वहां तक आता है. एंड समटाइम्स क्या होता है मार्केट इफ इट ब्रेक्स दिस इट माइट डिप हियर और इवन डिप हियर. सो पिवट का ब्रेक का वेट करना आपको और दिस इज योर 200 डीएमए. नोट करके रखो, लिख के रखो, लेट देयर बी लाइन. कल पूरा दिन मार्केट ने तोड़ने के बाद 200 डे निकाला नहीं अगर आप देखो तो, राइट. सो 200 आज की तारीख में मैं दो पिवट मार्क करूंगा. एक है दिस फॉर स्पाइक्स ऑन द अपसाइड एंड दिस इज द 200 डीएमए. देखिए पिवट का मतलब है सम डिसीजन मेकिंग व्हिच माइट गिव यू दैट वन स्ट्राइक मूव और ये लो है, राइट. अपार्ट फ्रॉम दिस दिस इज द हाई. टू मी इट विल बी अ बिग सरप्राइज इफ इट गोज टू देयर बिकॉज 200 दिन का एवरेज पे बड़े सेलर्स बैठे रहते हैं. एंड दीज आर स्टैक सपोर्ट समवेयर डाउन द लाइन. लग रहा 57,099 और 57,100 वी आर लाइकली टू टेस्ट. वहां पे आपको देखना है क्या मार्केट एक इंट्राडे स्पाइक मार रहा, रिवर्स मार रहा और इज ब्रेकिंग दैट. So again, बैंक निफ्टी में भी you will have to plot your VWAP. देखिए VWAP को आपको छोड़ना नहीं है given the market conditions. So if I plot my VWAP over here, and if somebody is wondering what is this VWAP, be regular and watch the sessions which I am doing. Like tomorrow we have the sessions. इस तरह मैंने VWAP भी डिटेल में 1 घंटे का रिकॉर्डिंग करके आपके लिए I have kept it for your reference. So this is let me remove the bands. Bands नहीं चाहिए. Yeah. कल भी अगर आप देखो तो वीवैप का स्पाइक आया था 342. 100 पॉइंट के स्पाइक्स देते. गॉट इट. सो दिस इज हाउ द मार्केट्स आर टुडे, बोथ द इंडाइसेस निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी. अभी मैं एक एग्रेसिव रेजिस्टेंस लू बैंक निफ्टी पे तो देखिए कल एक डिप आया, फिर एक साइडवेज कंसोलिडेशन, एक रेड कैंडल था इफ यू सी हियर, एंड देन वो हाई नहीं क्रॉस किया पूरे दिन. सो मैं इसको ही रेजिस्टेंस ले रहा हूँ आज के लिए. And now this is how a bank nifty is positioned today. Got it, friends? Just 14 likes today out of 30-40 participants. So before I end the session, the registration link is here. Volatility measure rules for option traders and for swing traders, defining volatility based on A, ATR, B, options data, which is straddle price, C, which is VIX, and the square root of uh, 52 weeks and a year. So ये तीन rules आपको जानना काफी जरूरी. इसके अगर without this, it becomes too tough to trade a range bound market. So tomorrow's topic is based on that. If you have not registered, the link is there. Do register. Right. So that's all from my side today, friends. Thanks and have a nice day, everybody. After the sessions, Daily Trader, Kaustum, Najib, do post your comment, good, bad, and ugly. So thanks. Have a nice day. We are going to again meet at 3:45 in the evening.